Everyone. Today we will be seeing an article of 8th August Hindu newspaper titled "The Great Barrier Reef's Recovery and Vulnerability to Climate Threats." Basically इसमें we will be seeing कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कह रहे हैं कि the condition has improved. तो but what are the potential threats and all वो सब हम देखेंगे. So yes, normal we will be studying corals and all its classification, but we will be studying it in a different way, ऐसा तरीका जिससे याद रहेगा always. तो corals, we know that are marine invertebrates or animals who do not possess a spine. Basically दो टाइप का होता है. एक होता है पॉलिप जो ऐसा मतलब और पॉलिप उल्टा जब हो जाता है तो ये ऐसे ऑक्टोपस जैसा लग रहा है मेड्यूसा. सो पॉलिप इज द नॉट फ्री फॉर्म विच इज अटैच्ड टू ग्राउंड एंड मेड्यूसा इज द फ्री फॉर्म जो बेसिकली कोरल ये पॉलिप होता है इन कोरल. ठीक है. तो थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी. तो हमने सुना ना कोरल कॉलोनी होती है. तो फीचर्स क्या है? कोरल्स लिव विद एल्गे जूस एंड क्ले. ठीक है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उनकी उन दोनों की. मतलब एक दूसरे की हेल्प करना. वन विल डू समथिंग फॉर द अदर एंड अदर विल डू समथिंग फॉर द फर्स्ट वन. तो वही जूस एंड क्ले खाना बनाता है एंड इट जूस एंड क्ले को घर देता है कोरल जिसका उसका जो शेल होता है. सो कोरल प्रोवाइड आउटर शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. by zoos and play provides them with food and it they also zoos and play also provides them striking colors. जो बहुत सारे रंग बिरंगे कोरल होते हैं that they it is color is due to zoos and play. So बेसिकली दो टाइप के कोरल्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और उसका डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हर्माटाइप और हार्ड कोरल्स एच एच से याद रख सकते हैं. एच फॉर हर्माटाइप, एच फॉर हार्ड कोरल्स एंड और रीफ बिल्डिंग कोरल्स. तो मतलब ये जो जो नॉर्मली कोई भी रिपोर्ट द रिपोर्ट विच हैज मेजर्ड कोई भी रिपोर्ट जो मेजर करती है कोरल कवर दैट इज मेजर्ड इन इंक्रीज ऑफ हार्ड कोरल्स दैट इज रीफ बिल्डिंग कोरल्स. एंड सेकेंड इज ए हर्माटाइप और सॉफ्ट कोरल और डीप वाटर कोरल. तो हम वी विल बी सीइंग हर्माटाइप फर्स्ट. अब हर्माटाइप होता क्या है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल कोरल. मतलब दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर कि रिस्पॉन्सिबल कोरल होता है वो. मतलब क्या है कि बहुत रिस्पॉन्सिबली इतना सारा काम करता है. कैसे भाई? अब रिस्पॉन्सिबल बंदा घर बनाएगा राइट. इट विल प्रिपेयर अ हाउस दैट इज मतलब द रीफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. हाउस मीन्स रीफ. इट बिल्ड्स हाउस ऑल लाइफ. अब भाई घर बनाने में it spends all his life in building house, so it has no time to cook food. So it outsources this task of cooking food to zoo and play. So here zoo and play comes in picture. So for making food, what do we need? We need warm water. So these are warm water cones. Photic. Photic means photic area is the area in sea जो कि ऊपर की साइड होता है some kilometers जहाँ पे where sunlight comes. These are clear water corals. Turbidity, they don't like turbidity. एंड आइडियल सैलिनिटी. ऑब्वियसली खाने में थोड़ा बहुत स्वाद अनुसार नमक होता है ना. तो दैट इज द ट्रिक टू रिमेम्बर हियर. फिर दीज आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ मार्जिन ओनली. राइट. मतलब ऊपर ऊपर के ट्रॉपिकल एरियाज में दीज आर फाउंड. सो एग्जाम्पल क्या है? द वन we will be seeing in this report which has been mentioned is Australia's Great Barrier Reef. It is the largest reef system in the world with 2,300 kilometer area. Second is Coral Triangle. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. बड़े बड़े कहीं भी एग्जाम्पल में लिखना हो तो वी कैन राइट दिस. फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया. सो yes, it is also related to the drug triangle. यहाँ पे इसी एरिया में होता है ना शायद. एक क्रिसेंट होता है, ड्रग क्रिसेंट, एंड ड्रग ट्रायंगल इज ऑल्सो फाउंड हियर. सो वी कैन रिमेम्बर विद दैट. तो and yes, coral cover as I told you is measured using hard corals only. ठीक है. सेकेंड इज ए हर्मा टाइप और सॉफ्ट कोरल और डीप वाटर कोरल. सो ये आवारा कोरल होता है. ये कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है. ठीक है. इट इज आवारा कोरल. दैट इज इट नाइदर बिल्ड्स रीफ नॉर प्रिपेयर्स फूड. ठीक है. तो सो इट इज नॉन रीफ वाला कोरल. इट कलेक्ट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर
जो whatever water is coming, it collects food from that, and it is as it does not need any warm water for building preparing food, so it is cold water coral. It is found in deep oceans everywhere, right? Like this was found in only continental shelf or margin. This is found everywhere in deep oceans, because in deep oceans there is no photic zone, right? So aphotic, and these are least researched. So example है black coral, right? And one more thing related to coral that is very much mentioned everywhere कि fringing reef, barrier reef and atoll. तो इस क्या है exactly what is all this? तो fringing reef होता है as it comes from the name fringe, the recent mention of fringe elements by some our state. मतलब क्या है कि these are little अभी कुछ कुछ formation नहीं हुआ है इनका, these are negligible in amount, right? फिर आता है बैरियर. बैरियर मतलब क्या है कि इट इज इट हैज बिकम सच कि इट इज नोटिसेबल नाउ, थोड़ा सा आ जाता है. एंड एटॉल क्या है कि ये इतना ज्यादा कोरल आ जाता है कि कॉन्टिनेंट इटसेल्फ गेट्स submerged, and later it forms a lagoon. So this is the major things related to reefs. So news क्या है exactly? What is the article about? So Australian Institute of Marine Science, which publishes annual long-term monitoring report. Now report has highlighted that highest levels of coral cover recorded in northern and central parts of Australia's Great Barrier Reef. We had read na कि Australia's Great Barrier Reef is the largest reef in the world. So we have found incidences of increase in coral cover in this within highest. It is the highest level in past 36 years. So is it a good news? Yes, it is a good news, but also researchers have warned that this can be quickly reversed owing to rise in global temperatures. So the, obviously if we don't care about the corals, so this can be easily reversed. So what is the danger exactly to corals? So in last couple of decades, there is a great climate change, which due to which there is a rise in temperature, which has made seas warmer than usual, and excessive warming is very harmful to corals. Second is from sand mining. We can write this point in sand mining topic also, that excess turbid waters are very harmful to corals. Second is sunscreen. Yes, many international many foreign countries have banned sunscreens, have banned the use of sunscreens on coasts. So because sunscreens harms coral, right? So yes, coral bleaching. What is coral bleaching? So whenever harmful conditions take place, normal color of coral changes to pale color, or we can say neon colors. Coral starts glowing neon, which is due to the release of zooxanthellae and exposing of the internal structure. So coral bleaching होती क्या है? What exactly is zooxanthellae? क्या होता है कि it starts producing reactive oxygen species, because it is not getting whatever things it needs to prepare food, so it produces reactive oxygen species, and thus corals उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, kick out the algae from the polyps, and this exposes their pale white exoskeleton, and this leads to coral starvation, and ultimately it will lead to death also, right? So the examples of mass coral bleaches that have taken place in a recent past is the most longest and most damaging bleaching was from 2002, in 2002 and 2014 to 17, and it also took place in 2020 and 2022. So this was all about it. Hope it helped. Thank you.